Okay, now we've got section 4 and another opportunity to get 10 by 10 because section 4 is also one word and or a number, one word only. And in section 4 lecture होगा, lecture आपने सुनना है, उसमें नोट्स होंगे, नोट्स में ब्लैंक्स होंगे, उन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है. तो अगर पार्ट 3 में कुछ मिस हो जाए तो दिल बर्दाश्ता नहीं होना, पार्ट 4 में वापस आपका कम बैक हो सकता है, लास्ट ओवर में छक्का लग सकता है. ठीक है, तो पार्ट 4 इज लाइक दैट, लास्ट ओवर. ओके, राइट वन वर्ड ओनली फॉर ईच आंसर. अच्छा, अब बात किस पे करने जा रहा है? मेमोरी पे. टॉपिक चेक करेंगे कितने पुट्ठे हैं. आपका जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है ना, इन दोनों सेक्शंस में लिसनिंग में हमेशा एजुकेशनल कंटेंट आएगा, जिसको हम बोलते हैं ना एकेडमिक कंटेंट. अब नैनो टेक्नोलॉजी किसी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, ये भी कहीं सोशल साइंस में फिट होता होगा. ठीक है. एपिसोडिक मेमोरी. अब एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो ऑडियो में बताएंगे कि एपिसोडिक मेमोरी जो है ना, इस टाइप की मेमोरी को हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं. सो एबिलिटी टू रिकॉल डिटेल्स, साथ ही लिख दिया. एपिसोडिक मेमोरी का क्या मतलब है? एबिलिटी टू रिकॉल डिटेल्स. फॉर एग्जाम्पल टाइम. अच्छा, अब टाइम को अंडरलाइन करें. हो सकता है वो टाइम का वर्ड ना लगाए, वो बोले व्हेन समथिंग हैपेंड. व्हेन समथिंग हैपेंड का क्या मतलब है? टाइम. ठीक है, टाइम. व्हेन समथिंग हैपेंड एंड डैश ऑफ पास्ट इवेंट्स. अब समथिंग रिलेटेड टू पास्ट इवेंट, टाइम की जगह पे आ जाएगा व्हेन समथिंग हैपेंड, राइट. और देन दिस से वेयर और द सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स. तो आंसर जो है आपका पास्ट इवेंट्स के साथ आएगा. आप जरा फोकस करें, क्या बोलते हैं टाइम के बाद और पास्ट इवेंट्स के साथ. Today, we'll be continuing the series of lectures on memory by focusing on what is called episodic memory and what can happen if this is not working properly. Episodic memory refers to the memory of an event or episode. Episodic memories allow us to mentally travel back in time to an event from the past. Episodic memories include various details about these events. For example, when an event happened and other information such as the location. When something happened and other information such as the location is the right answer. और ये जो EG दिया हुआ है ना, EG का मतलब है फॉर एग्जाम्पल. और पहली दफ़ा उसने बोला फॉर एग्जाम्पल, दूसरी दफ़ा बोला सच एज the location. So for example, such as, an answer is location. Question number 32 पे आइएगा. Different to semantic memory, ability to remember general information about dash. आप general information को underline करें. Ability to remember general information, और general information की जगह पे general knowledge का word भी आता है. ठीक है, जनरल नॉलेज अबाउट. अच्छा, अब आइट्स में क्या होगा? फर्ज करिए अगर आंसर है आपका अबाउट पीपल, तो इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल. अबाउट की जगह पे क्या लग गया? ऑफ लग गया. अब इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल, समथिंग लाइक दैट. अब अबाउट की जगह पे प्रेपोजिशन आएगा ऑफ, और टू रिमेंबर जनरल इंफॉर्मेशन की जगह पे आ सकता है नॉलेज. नाउ लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. To build upon a previous example, remembering where you parked your episodic memory is distinct from another type of memory called semantic memory. This is the type of factual memory that we have in common with everyone else. That is your general knowledge of the world. Your general knowledge of the world. जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, और जनरल नॉलेज की जगह पे आ गया जनरल इंफॉर्मेशन, और अबाउट की जगह पे आ गया ऑफ, और आंसर हो जाएगा वर्ड. WORD. LD. एब्सोल्युटली, वरना राइट आंसर रॉन्ग हो जाएगा. विच डज नॉट इन्वॉल्व रिकॉलिंग, एंड उसके बाद है डैश इंफॉर्मेशन. विच डज नॉट इन्वॉल्व रिकॉलिंग, क्या आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, रिकॉल नहीं करना पड़ेगा. एंड डैश इंफॉर्मेशन. डैश इंफॉर्मेशन का मतलब है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे आप बोलते हैं ना जनरल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एनीथिंग लाइक दैट. सो क्वेश्चन नंबर 33, आंसर इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन.
To build upon a previous example, remembering where you parked your car is an example of episodic memory. But your understanding of what a car is and how an engine works are examples of semantic memory. Unlike episodic memory, semantic memory isn't dependent on recalling personal experiences. Okay, personal experiences और information की जगह पे word आ गया experiences का आंसर क्या होगा personal. Well done, personal. और जो does not involve है उसकी जगह पे बोला unlike or does not. Okay, let's go on. Forming episodic memories involves 3 steps. पहला step है encoding. Encoding में involves receiving and processing information. दूसरा step है more dash given to an event. अब कोई event है more का word underline करें. First करें आपका आंसर है more detail given to an event. For example, आंसर क्या है detail. More detail given to an event. ऑडियो में क्या बोलेंगे अब ये चीज ज़हन में रखनी है कि more का वर्ड जहां पे आएगा वहां पे वो बोलेंगे level of. More detail given to an event, level of detail given to an event. तो more will be replaced by level of. ठीक है? Now let's see. Episodic memory can be thought of as a process with several different steps of memory processing, encoding, consolidation, and retrieval. The initial step is called encoding. This involves the process of receiving and registering information which is necessary for creating memories of information or events that you experience. The degree to which you can successfully encode information depends on the level of attention you give to an event. Level of attention. Well done. You give to an event. Level of attention you give to an event का क्या मतलब है? More attention given to an event. आंसर क्या होगा? Attention. ठीक है? ये चीजें समझनी है और ये चीजें रिपीट होंगी. Level of और more किसी और टेस्ट में भी आएगा. Right? Let's go on. Remember a dash. To remember a dash, it is useful to have a strategy for encoding such information. अब to remember का word underline करें. Remember की जगह पे आ सकता है recall या फिर आ सकता है recollection. ठीक है? Remember a person, recall a person, recollection of a person, remember, recall, recollection. उसके बाद आएगा answer. Encoding of episodic memories is also influenced by how you process the event. For example, if you were introduced to someone called Charlie, you might make the connection that your uncle has the same name. Future recollection of Charlie's name is much easier if you have a strategy to help you encode it. Okay, future recollection of name, Charlie's name. Answer जो है one word का होना चाहिए. अब Charlie नहीं हो सकता. Answer is name. That's right. Correct answer is name. दोबारा सुनिएगा इसको. Encoding of episodic memories is also influenced by how you process the event. For example, if you were introduced to someone called Charlie, you might make the connection that your uncle has the same name. Future recollection of Charlie's name is much easier. Okay, future recollection of Charlie's name is much easier. So to remember, उसकी जगह पे आ गया recollection. Answer is name. Okay, let's go on. Consolidation. एक method है memory का encoding. दूसरा है consolidation. यहाँ पे second bullet point पे आए. Most effective when memories can be added to a. अब underline करें added to a. और आम तौर पे ये add का word जब use करते हैं तो इसको करते हैं link के साथ connect. Add to can be linked.
add to, can be linked. अगर आंसर फर्स्ट करें कैन बी एडेड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, आंसर फर्स्ट करें ग्रुप ऑफ पीपल है, कैन बी एडेड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे, कैन बी लिंक्ड विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, कैन बी लिंक्ड, कैन बी एडेड. अब जरा गौर से सुने, जहां पे कैन बी लिंक्ड आएगा उसके बाद आपका आंसर आएगा. Memory consolidation, the next step in forming an episodic memory, is the process by which memories of encoded information are strengthened, stabilized, and stored to facilitate later retrieval. Consolidation is most effective when the information being stored can be linked to an existing network of information. Okay, can be linked to an existing network. अब आंसर existing नहीं होगा, आंसर क्या होगा, network. Can be linked to an existing network. Question number 37, the dash of retrieval affects strength of memory. अब ये टॉपिक थोड़ा सा उल्टा है, मेमोरी पे है ना, बास का आ जाता है सिंपल टॉपिक, कोई जानवरों पे होगा, कोई किसी चीज़ पे होगा. अब ये डिपेंड भी करेगा कि आपका टॉपिक क्या है पार्ट 4 का. एनीवेज, dash of retrieval affects the strength of memory. Okay, let's see something of, अब फोकस करें retrieval effects को, कि जिससे आप किसी चीज़ को याद करते हैं, effects उसके, retrieval effects. Consolidation makes it possible for you to store memories for later retrieval indefinitely. Forming strong memories depends on the frequency with which you try to retrieve them. Okay, frequency with which you try to retrieve them. So frequency of retrieval. Frequency with which you try to retrieve them means frequency of retrieval. Answer will be frequency. That's right. Question number 38. Retrieval, memory retrieval often depends on using a prompt. अब मेमोरी रिट्रीवल जो है प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करती है. वो प्रॉम्प्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल. ईजी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, सच एज, लाइक, द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी कौन सी चीज़, फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट की कोई एक चीज़, उसके साथ आपका एडजेक्टिव लगेगा. नियर टू द प्लेस वेयर यू लेफ्ट योर कार. ठीक है, अब फर्ज करें आपने गाड़ी दरख्त के साथ खड़ी की, तो उस दरख्त का साइज हेल्प करेगा मेमोरी को वापस लाने में, या उस दरख्त की शेप और एनीथिंग लाइक दैट. The last step in forming episodic memories is called retrieval, which is the conscious recollection of encoded information. Retrieving information from episodic memory depends upon semantic, olfactory, auditory, and visual factors. These help episodic memory retrieval by acting as a prompt. For example, when recalling where you parked your car, you may use the color of a sign close to where you parked. Color of a sign close to where you parked. So answer is color. Well done. Color of a sign. Object की जगह पे word आ गया sign का. Let's go on. Question number 39. Episodic memory impairments. These affect people with a wide range of medical conditions. Second, games which stimulate the dash. अब जो games हैं वो किस चीज़ को stimulate करती हैं? अभी हमने जब ऑडियो में वो नहीं कर रहे थे, एल्डरली के बारे में बात कर रहे थे. प्लेइंग वीडियो गेम्स हेल्प देयर माइंड, मे बी गेम्स स्टिमुलेट योर माइंड और एनीथिंग लाइक दैट. सो गेम्स स्टिमुलेट समथिंग. अब फोकस करें, गेम्स किस चीज़ को स्टिमुलेट करती हैं. हैव बीन फाउंड टू हेल्प पीपल विद शिज़ोफ्रेनिया. शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी का नाम है. There are a wide range of neurological diseases and conditions that can affect episodic memory. These range from Alzheimer's to schizophrenia to autism. An impairment of episodic memory can have a profound effect on individuals' lives. For example,
The symptoms of schizophrenia can be reasonably well controlled by medication. However, patients' episodic memory may still be impaired, and so they are often unable to return to university or work. Recent studies have shown that computer-assisted games designed to keep the brain active can help improve their episodic. Okay, computer assisted games. And for stimulate, what's the word? Active. And answer is brain. Dobara sune last part. Recent studies have shown that computer-assisted games अब गेम से पहले की जो ऑडियो चल रही है उसको ध्यान से नहीं सुनना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? गेम्स. गेम्स के बाद क्या बोल रहा है? कंप्यूटर असिस्टेड गेम्स designed to keep the brain active designed to keep the brain active. का मतलब क्या है? Stimulate the brain. Stimulate का मतलब है to keep active. Answer is brain. Question number 40. Children with autism may have difficulty forming episodic memories, possibly because their concept of dash may be absent. Underline करें concept of और absent को, कि किस चीज़ का, और concept की जगह पे idea, concept of something is absent. Episodic memories can help people connect with others, for instance by sharing intimate details about their past, something individuals with autism often have problems with. This may be caused by an absence of a sense of self. This is essential. Of self. Well done. So By an absence of a sense of self. okay, concept की जगह पे आ गया sense of self. Absence, the sense of self. So sense of means concept of, and absent की जगह पे आ गया absence, और आंसर क्या होगा? Self. Right?